राय साहब आप सवाल नहीं पूछेंगे? सर गोली क्यों चलाई? हमारा सवाल राय है। साहब भी सवाल नहीं पूछना चाह रहे हैं। शुक्रिया जी। ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, in accordance with the subsection of section 137 of Election Act 2017, it is mandatory for every MNA to submit their statement of assets and liabilities to the Election Commission of Pakistan on or before the 31st of December each year. Subsection 3 of section 137 further states that the Election Commission shall, by an order issue on the 16th of January, suspend the membership of any MNAs who fail to submit the required statements of assets and liabilities by the 15th of January. Such MNAs will cease to function until they fulfill their requirements. Therefore, all MNAs are requested to verify their compliance with the requirements at the earliest. Those who have not yet submitted their statements of assets and liabilities are requested to do so by 15th January 2025 to avoid suspension of their membership. जी, उमर अयूब साहब को मौका तो मिला अभी 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 हाउस को ऑर्डर करें तो क्वेश्चन आवर लें। क्वेश्चन आवर नहीं चाहते? जी, क्वेश्चन आवर मिस्टर जुबैर खान वजीर, नॉट प्रेजेंट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर राय हसन नवाज। राय साहब आप सवाल नहीं पूछेंगे? सर गोली क्यों चलाई? हमारा सवाल राय है। साहब भी सवाल नहीं पूछना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर राय हसन नवाज साहब का सवाल है। जी, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब। ख्वाजा साहब नंबर पढ़ें। In accordance with the subsection of section 137 of Election Act 2017, it is mandatory for every MNA to submit their statement of assets and liabilities to the Election Commission of Pakistan on or before the 31st of December each year. Subsection 3 of section 137 further states that the Election Commission shall, by an order issue on the 16th of January, suspend the membership of any MNAs who fail to submit the required statements of assets and liabilities by the 15th of January. Such MNAs will cease to function until they fulfill their requirements. Therefore, all MNAs are requested to verify their compliance with the requirements at the earliest. Those who have not yet submitted their statements of assets and liabilities are requested to do so by 15th January 2025 to avoid suspension of their membership. जी, उमर अयूब साहब को मौका तो मिला अभी 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 हाउस को ऑर्डर करें तो क्वेश्चन आवर लें। क्वेश्चन आवर नहीं चाहते? जी, क्वेश्चन आवर मिस्टर जुबैर खान वजीर, नॉट प्रेजेंट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर राय हसन नवाज। राय साहब आप सवाल नहीं पूछेंगे? सर गोली क्यों चलाई? हमारा सवाल राय है। साहब भी सवाल नहीं पूछना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर राय हसन नवाज साहब का सवाल है। जी, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब। ख्वाजा साहब नंबर पढ़ें।